Okay, good morning everybody. So, do you have any doubt regarding the previous lecture? How we approach the question? सब समझ में आ रहा है? So, shall we wait for 5 more minutes for the other students? Otherwise, I have to again repeat the thing. Okay? अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने you people are comfortable in Hindi ना? Okay. So, till now what we have discussed, I am again repeating it because it will save time for both of us. We can wait also and revision will also occur at the same time. So whenever we will see the percentage, first of all the thing what we will do, we will convert it into fraction. Okay, in order to remove the percentage sign, what we will do, we will divide that particular by 100 or multiply 100 in denominator. Okay, then we have two things, we are left with two things, numerator and denominator of that particular fraction which we received. Okay, now depending upon the base of the percentage, that percentage is defined on which base, population has increased, income has increased, or whatever happened, the denominator represent that thing only. Okay, it means the original quantity of what we are choosing or what is given, and the numerator will represent either the change or the new quantity. How we will differentiate in that? Through the question. If something is given that it becomes this, it means that the numerator represent the new quantity. But if it is said that something has changed, something has increased or decreased by this percent, then numerator will represent change. So whatever the new quantity which we have to calculate, it totally depends upon our denominator plus or minus the numerator of that particular function. Okay, so I think that this approach, and other than this, hardly 1 to 2 approach more, that is, believe me, that is more than sufficient to tackle the entire CSAT questions except number system. Number system, why I am saying except number system? Because number system is all about a different thing. It's totally different, because I think that you have seen the questions like 3 to the power 2450, when it is divided by something, what will be the remainder? Or if any number is given, when it is divided by 10 or 100, what will be the number? So these type of things, these are pure mathematics. They don't have any connection with the topics like percentage, ratio, proportion, mixture, relegation, time and work, speed and distance. It is all about different. So by the time I am thinking that we will start number system at last. Okay, because since we have started percentage, so there are multi dimension of this particular chapter. Okay, so we are going to discuss all the other chapters as a separate dimension of percentage only. After completing all those chapters, two chapters are remaining which don't have connection. First is number system, as I already told you, and the second is permutation, combination and probability. Okay, in these two chapters we will not find any linkage of percentage. Okay, and I think that you people are little bit familiar with the permutation, combination and probability also, little bit. Oh, don't worry, matlab, that is not the prerequisite condition of attending my lecture. I will give you thorough explanation right from the base. Okay, so I think that 1 to 2 minutes more, thereafter we will continue. Okay, and one another important thing is that on 5th or 5th onwards, our timing will be 9 AM. Okay, because I have other engagements also and I am free. Okay, 9 to 10:30, 10:45 मैक्स. ओके, नींद आने लगती है लोगों को इतने में. एक्चुअली इट हैपेंस, होता है ये. वेन एवर मतलब यू आर नॉट इंगेज इन राइटिंग एनीथिंग ना, जनरली इट्स अ टेंडेंसी दैट वो नींद आने लगती है और क्लास ख़त्म होने के बाद नींद ख़त्म हो जाती है. हाँ, लेकिन अगर आप, इफ़ यू पीपल आर मतलब रिगरसली इन्वॉल्व इन राइटिंग, समबडी इज़ डिक्टेटिंग एंड यू पीपल आर राइटिंग ना, तो उस समय नींद नहीं आती है. बट सुनते रहते हैं, इतनी उम्र हो गई है, आज तक सुन ही रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नींद आने लगती है. सो इट्स नॉर्मल फिनोमिना. दैट्स वाई आवर लेक्चर विल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड, मतलब आई विल ट्राई नॉट टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 hour 30 minutes और मैक्स 40 minutes. अच्छा, अनदर थिंग, what are your expectation regarding the duration of the course? How many months you want to finish?
मतलब आई एम सिंप्लीफाइंग माई क्वेश्चन, हाउ मेनी लेक्चर्स पर वीक यू पीपल वॉन्ट? See, I am free to take all the 7 days, okay? But your concerns matter more. Four. No, there is. देखो, be in touch. That's I am saying that. See what happened generally. Up to December you have time to read your optional also, to focus more on newspaper reading, magazines, all other things. But whenever January is going to start, you people don't have time, because whatever you have read from mains perspective, the same thing you have to read for prelims also. And there is a slight difference. I am not saying that the courses are different. Course is same. You have to study. There is no separate preparation or separate material for prelims and mains. The material is same. Only the difference is about our approach. For mains we have to memorize the points. For mains we have to get the context, logics. But for prelims we have to focus more on facts. Okay. So the material is same. Only the approach differ. Okay. Some topics we can left from prelims perspective, like many topics of society, some topic of geography, because prelims is basically fact based. Okay, so January onwards you people will face time crunch, and in those time only economic survey will come, budget will come, along with those things question paper. I think that you people used to practice those question papers also. So that's why I am asking you people that we will try to finish course as early as possible, first thing. And these 4 to 5 months na, please pay little bit attention at your home, okay, so that you can develop confidence, you can develop a new approach to any question. Otherwise what we do, suppose if you are not practicing, what will happen whenever you are sitting in the examination hall na, then you will forget about all these approach and you will follow your traditional approach. Why? Because you have paid more time, more attention over that approach. So this is the time to focus on this, so that whenever you are going to encounter any question, directly in your mind strike this way of attempting that question. Okay, for time being, now let's start the lecture. Okay, so see here, I think that in question number 1 no problem. If you people are comfortable, then only write, otherwise a soft copy will be given to you people. Okay, the PDF of this will be provided by the administration. Okay, question number 2 we have already dealt, question number 3 also, yes, question number 4, yes, question number 5, yes, question number 6 also. Now see, now moving to question number 7. See what question number 7 is saying, that the population of a town is 1,89,000. Okay, means 1,89,000. 4 by 9 of them, 4 by 9 of them are male. Okay, stop here only. What does this line mean? 4 by 9 of them, 4 by 9 of them are males. It means that out of 9, 4 are males. It means that, suppose whenever we say that now there are 3 people and there is a dispute regarding the property, so we say in general terms we say that now 1/3 everybody will get. If there are 3 people, it means that 1/3 everybody will get. It means that 3 represent the total number of persons who are present, and out of this 3, this one is distributed to each one. Basically this, see, till now we are familiar with the fraction, we are familiar with the percentage, but we haven't thought about what exactly numerator and denominator want to convey. हमें पता है कि भाई परसेंटेज है तो ये होता है, बट हमने कभी उसको इन डेप्थ सोचा नहीं है कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है.
ठीक है, हम हमेशा फॉर्मूले के पीछे भागे हैं, परसेंटेज मिल गया है तो हम हमेशा उसे एज इट इज़ ले लिए हैं। कभी भी हमने एक बार भी रुक के ये नहीं सोचा है कि परसेंटेज इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और एनी फ्रैक्शन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, व्हाट लिटरली दे रिप्रेजेंट। हमें पता है इफ 3 पीपल्स हैं 1/3 डिवाइड करना, इट मीन्स दैट ऑल विल गेट इक्वल अमाउंट, बट व्हाट डज 1/3 एक्चुअली रिप्रेजेंट? ओके, so 3 always represent the total amount, and out of this 3 everybody will get 1. So if total 3 persons, then suppose person A, person B, person C, okay, A also get 1, B also get 1, and C also get 1. It means that add all this, what we will get? 3. Okay, and the total quantity is also 3. It means that all the entire quantity is divided equally among the 3 persons A, B and C. Okay, कभी सोचा था इतना डिटेल में कि क्या होता है? बस वो अपना काम चल जाता है, 1/3 है, हो गया, कभी दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी. So see here, now moving back to the question. What question is saying that 4/9 of them are males. It means that how many total persons are there? 9. And out of these total 9 persons, 4 are males. It means that how many females are there? 5. यहाँ तक समझ में आया? So here 4 is the male and 9 represent total population. हो गया यहाँ तक? Now let's proceed. And rest are females. Okay, 50% of males are married. Out of these 4, 50% of the males are married. So it means that how many males are married? 2. See, male 4, how many females are there? 5. So out of these 4 males, 50% are married. So it is but obvious that if 50 males are married, then they are married to whom? But obvious they are married to female. So it means that out of these 4, 2 males are married to 2 females. Okay, now find the percentage of married population. They are asking find the percentage of married population. So how many are married? How many persons are married? No, 2 plus 2 na. 2 males are married to 2 females. It means that total how many are married? 4. And how many total population is there? 9. It means that 4 are married. 9, 4/9 into 100. Now since we are multiplying 100 in numerator, we will apply the percentage. Okay, so see here 4/9 into 100, that comes to be 44 whole 4/9%. I think that by this time you are familiar with this conversion, or if any doubt ask me, I will do it again. If it is okay, then I will proceed. Okay, so it means that 44 whole 4/9% are married, and the percentage of married females, how many percentage of females are married? Okay, so see here, how many married females are there? 2, because 2 males are married to 2 females. So 2 upon what I will keep? 9 or 5 or 4? Okay, 4. Anjali? 5. See here, what was the first question? The percentage of married population. It means that here word is population. It means that we have to calculate total number of married with respect to population. That's why I kept here 4/9. But in the second part, what has been asked? Find the percentage of married females. It means that married female has been asked. So it means that total number of married female upon number of females. Are you getting? So that's why total number of married females are 2. Total number of females is 5. So percentage here is 40%. Now see what I want to convey by this method, that it is not required that all the informations which are given in the question
is to be utilized. See here, the total population was also given. 1,89,000 is the total population of that particular town or that particular area which we are concerned. But even without using that particular fact, we have calculated the result. So this is actually the tactics which I want to convey to you people, that try to understand the logic or try to understand the concept which is underlying behind any question. Are you getting? See here, we have calculated the entire portion what has been asked, but not even use this also. आपको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है ना, एक बार once we will get the good hold over this approach ना, literally math will become very easy. You people after seeing the question only na, okay, now tell me one thing also. Suppose I am clearing it. See in this question, okay, total number of population is given how much? 1,89,000. But in our solution part, what we assumed, that this 9 represent the total number of population. It means that 9 is equal to 1,89,000. Okay, so 1 will represent okay. So how many is the total number of males? Total number of male is 4. So if it has been asked in the question that how many are males, then what we will do? We will multiply it by 4, because this is equal to 1, and in our solution part 4 represent the male. Tell me, is it okay? So देखिए, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज यही था हमें, to make you people understand this. It is not mandatory to use all the facts which are given in the question. We can also arrive to the solution without using the facts which are given in the question. This is a live example of that. Second aspect, as I have already told you, how we can save time. So we can save time by this approach, and second thing is that we can save time by minimizing our calculation effort. If we are not aware of this method, then what will come in the picture? In picture, this entire calculation will come, and see how easily we skip this calculation part. So here also definitely your time is going to be saved. And what I told you people, that as a practice, what you have to do, simply at your home try to multiply and divide. This is the only requirement to increase your calculation efficiency. Akash, this is the question I have discussed. See, the question is saying that गर्मी लग रही है आप लोग को, कंफर्टेबल हैं या फैन ऑन करवाना है? ठीक है, चलिए देखिए, question number 7 was saying that in a town there are 1,89,000 population. 4 by 9 of them are males. Okay, now read up to here only. 4 by 9 of them are males. It means that, see, I have taken an example. I am trying to explain you the same thing. Suppose if it has been said that there is a property and 3 persons are there, and all have to divide, all have to get the equal portion of that property, then what fraction each one will get? 1/3. Then only everybody will get equal amount. So see here what 1/3 represent. See here 1/3. It means that, मतलब इन जनरल ट्रेंड हम कहते हैं 3 लोग हैं, तीनों को बराबर चाहिए, तो हाउ मच दे विल गेट? तो हम बोलते हैं 1/3, 1/3, 1/3. Okay, so here the fraction 1/3 what actually represent? 1/3, suppose there are 3 persons, A, B and C. Everybody will get 1/3. It means that total property available is 3 and everybody is getting 1, 1 and 1. 1/3 basically represent this thing, that since total property, if we are going to convert that property into unit, then total property is 3 and everybody is getting 1 unit out of it. So that if we will add their portion, then all we get 3.
It means that total there was 3, everybody was getting 1. So we can say that how much 1 or how much A is getting. So out of 3, A is getting 1, or it means that this. Out of 3 total, A is getting 1. Is this okay? Now let us move to the question part. What question is saying that 4 by 9 of them are males. It means that total population is 9. Out of 9, how many are males? 4. Up to this level it is okay? Then you please tell me, then how many are females? Huh? 5. So see here, males are 4 and females will be 5. Now what question is saying that 4 by 9 of them are males and rest are females. Done. 50% of males are married. It means that out of these 4 male, how many are married? 2. So 2 males are married and definitely 2 males are going to marry 2 females. It means that out of these 5 females, how many females are married? 2. Because 50% of males are going to marry, then obviously they are going to marry female. So out of those 5 females, 2 females are married. Okay, now what has been asked in the question? 2 things. First, find the percentage of married population. Okay, so leave about the question, focus on solution part. According to the solution, how many are the total persons in that community? 9. Total number of population is 9 only. And what has been asked? Find the percentage of married population. And how many persons are married? 4, 2 males and 2 females. So here find the percentage of married population. So total number of married 4 upon 9. Is it okay? Total persons are 9, because here the percentage has been asked with respect to population. Matlab out of given population, how many persons are married? So total number of married persons are 4, 2 male and 2 female. And what is the total population? Total population is 9. So our answer will be 4 upon 9 into 100. That will be the percentage. Second part, find the percentage of married female. Percentage of married female. So here see, the percentage has been asked with respect to female. Percentage has been asked with respect to female. So how many total females are there? 5. So we will write in denominator 5. Okay. How many are the total married females? Because here see, married female has been asked. So how many married females are there? 2. So 2 by 5 into 100%. Is this okay? Now see, we have calculated the entire question. Okay. But even though we are not using 1,89,000. Why? So by this question I want to convey to you people that in order to reach the solution or answer, it is not mandatory to use all the facts which are given in the question. Okay. This is the way you are talking, like the one which you are like bringing in this solution. But अगर कोई और सॉलिड फॉर्मूला तरीका होता तो उसमें पॉपुलेशन का नंबर यूज किया होता? हाँ कर सकते? हाँ आप करोगे, पर इस वाले में क्या हो रहा है क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी है. अब सी yesterday Pallavi has asked, sir time बहुत लगता है. So I already at that time I told her that see, there are only 2 ways in which you can save time there. First of all, you can minimize your calculation portion. Up see here, what we have to calculate 4, 9, 2, 5. Is it easy, or we will take this 18900 into our picture? Definitely this is going to save our time in both way. First of all, it will make the calculation easy and it will save our time also. So by this question I particularly want to focus that it is not mandatory to use all the facts which are given in the question. Try to focus on this approach and you will see lot of application of this particular method. Okay.
and we have very simply calculated the percentage also. If the digits which we are choosing is small, then it suffices to benefit. First of all, it will help us to reduce our time, calculation time, and the second thing is that calculation mistake, because the dividing 4, 9, 5, 100, it is comparatively easy as compared to 1 lakh or 2 lakh or 10 lakh number. Achha, I will ask to the administration that after the end of my every lecture you will get the handout, okay, so that we can save this time also. Or if anybody is attending online, then they will get the soft copy, okay, that will be easy, so that here you will only focus on understanding rather than noting down, okay. And see, I have made these things after solving, believe me, even in the preparation of one topic, I have to solve more than 100 or 150 questions to cater all the different aspects, so that by the end of a particular topic, nobody can say that sir ये aspect छूट गया है, okay. So कभी कभी some mistakes मेरे से हो जाती हैं, तो वो mistake को मैं आपको बता दूंगा, so that whenever you will get the handout in hard format or in soft format, then note it down only that in question number this, topic this, there is a slight mistake, so that whenever you will get corrected by yourself, okay. So shall I move to next question? Okay. See here that a labor works 60 hours per week. A labor is working 60 hours per week and he had rupees 2,400 as wages. If his per hour wage is increased by 40% and the duration of work is reduced by 16 whole 2 by 3%, find the percentage change in his income. So first of all, see, we have to establish a relation. This is very much required, as in case of rectangle also, we have established a relation that area is equal to length into breadth, and don't consider this as a formula, huh? Itna to lagega hi, okay. So similarly, for the calculation of wages, what we have to calculate, we have to establish a formula. First of all, per hour how much he is charging and the number of hours he is working. When we will multiply both these, then only we will get the wages. Means what is the rate of him, how much he charge per hour and the total number of hour he is working, then only we can calculate the wage. Now we have established this formula or we have established this relation. Now see, his per hour wages is increased by 40%. See here, increased. So what we will do, as I already told you, as soon as we encounter any percentage, the first thing which we will do, which we have to do is converting that percentage into fraction. So here see 40%, 40 upon 100, whenever we are going to remove the percentage sign, we will bring 100 in denominator, 2 by 5. Now here plus will come. 2 always represent, denominator always represent the original quantity. So the original wage is 5 unit he is earning, or 5 rupees for our calculation per hour, okay. Now it has been increased by 2. So new amount will be, new charges will be 7, 5 plus 2, 7, nothing new. Now, and the duration of work is reduced by 16 whole 2 by 3%. So when we are going to convert 16 whole 2 by 3%, it will become 1 by 6. And since it has been reduced, so here minus sign will come. So original working duration is 6. And the new working duration will be 6 minus 1, 5. Okay. So what was his earlier wage? 5 into 6, 30. What is his new wage? 7 5 is 35. So definitely his wage is changing by how much amount? 5. Changing by how much percentage? So this 5 is the change which occurred with respect to original, as I already told you. So 5 upon 30 into 100, this is the answer. Here also see,
there is no any need of 2400, isn't it? समझ में आ रहा है? तो it is not mandatory. I am again repeat. हाँ, अब see, if they are going to ask what will be his new ways, if that has been asked in the question that what will be his new ways, so very simple. What was his initial ways? 30. So our 30 is equal to questions because in our solution part we are assuming that his original ways was 30, but in question it was mentioned that his original ways is 2400. So 30 will represent 2400. So what will 1 represent? 1 will represent divided by 30. 1 will represent 80. So our new ways is 35. Okay. So we will multiply 80 by 35. Whatever will come is the new ways. देखिए एक बार जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी ना, सो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना, यू विल बी इन दैट पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. अभी समझ में आया? बट सी जहाँ तक हो सकता है हम अवॉइड करेंगे. अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी हियर टू मतलब यूज 2400 बाय दिस अप्रोच. सो इवन दो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी. Any issue in this question, or shall I proceed to next question? हाँ बताइए. 6 and 5 आपने क्यों लिया है? किसमें? आपने जो रुपीस पर आर लिखा है हाँ. वो तो ठीक है, बट ये आवर्स में आपने 6 and 5. See, the duration of the work is reduced by this %. एक तो उसे पर आवर कितना रुपए मिल रहा है. सपोज मैं कहीं अगर 5 आवर वर्क कर रहा हूँ और मैं चार्ज कर रहा हूँ 100 रुपीज़ पर आवर, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को कितना मिलेगा? अगर मैं 5 आवर वर्क कर रहा हूँ और मैं हर घंटे का 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ, तो बाय द एंड ऑफ दैट एंटायर डे हाउ मच अमाउंट आई विल गेट? 500. बिकॉज आवरली बेसिस आई एम चार्जिंग 100 रुपीज़ and total I am working 5 hours, so it means that 5 into 100 500. Similarly here this person, the duration is reduced by 16 whole 2 by 3%. The duration is reduced. Okay, so 16 whole 2 by 3% can be converted into 1 by 6, and since the duration has reduced, so here minus will come. It means that originally he is working for 6 hours, now he will work for 6 minus 1, that is 5 hours. सही है पल्लवी, आकाश? शैल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? सी धीमे धीमे हम ना एक एक स्टेप बढ़ते रहेंगे और फाइनली एट द एंड सब तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे. ठीक है, अभी चूंकि ये नया मेथड है, सो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको दिक्कत हो रही होगी. एंड आई हैव ऑल्सो चूज एन परसेंटेज. देर आर इजी टॉपिक्स ऑल्सो इन विच वी हैव टू फोकस ऑन ओनली 1 डायमेंशन, बट हियर परसेंटेज वी हैव टू फोकस ऑन 2 to 3 डायमेंशन. लाइक दिस रेशियो एंड प्रपोर्शन इज ऑल्सो कमिंग इन टू पिक्चर, and this unitary method is also coming into picture. But since even though I have chosen percentage, because शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बाद में आसान रहेगा. अदरवाइज हम टाइम एंड वर्क से भी शुरू कर सकते थे. वहाँ पे क्या था, एक ही डायमेंशन था, बड़े आराम से होता, लेकिन विद टाइम धीमे धीमे नए नए डायमेंशन आते. अभी परसेंटेज हमने लिया है तो ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ ऑल द डायमेंशन वी आर डीलिंग हियर ओनली. इस वजह से थोड़ी स्पीड भी अपनी स्लो है. एक बार आप लोग इस मेथड से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे ना, देन आवर स्पीड विल इंक्रीज. Okay, so moving to next question. Now see, we are raising the level of the question one by one. See here, what is asking in the question that a student multiplied a number by 3 by 5. Okay, a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. Is it okay? समझते हैं, ये क्लर्कियल एरर है, हो जाता है. हमें 3 by 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, हम 5 by 3 से कर दिया. द क्वेश्चन इज सेइंग दिस मच ओनली. तो रिजल्ट कुछ तो डिफर करेगा. सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3 by 5, बट बाई मिस्टेक वी हैव मल्टीप्लाइड दैट गिवन क्वांटिटी बाई 5 by 3. सो द फाइनल आउटकम विल डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल वन जो एक्चुअल में होना चाहिए था. इज इट ओके?
So find the percentage error in the calculation. वो जो परसेंटेज चेंज आएगा ना, एक्चुअल में वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 3/5, so we reach to a desired result. Okay, but instead of multiplying by 3/5, we have multiplied it by 5/3, so definitely the outcome will change. So now they are asking that, and that change is nothing but the error in the final result. Suppose we have to calculate and the end result should be 10, but we are getting, by committing some mistake, we are getting a result 15. So it means that there is a error of 5 unit. Ideal case which was required was 10, but through calculation somewhere we have committed mistake and we are calculating 10 as 15. So it means that there is a difference between the ideal scenario and what we calculated. So that difference is called the error. So we have to find out that error. Okay, so see here. Now what I will say that in our traditional approach we generally used to say let that number to be x, let that number to be x. अब x को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से, तो हम निकाल लेंगे एरर. बट हियर सी चूजिंग x विल क्रिएट प्रॉब्लम, टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम. फर्स्ट, a variable comes, and I already told you that we will try to avoid variable as much as possible, because generally I have find out that those students who don't have math background, they have a fear from x, y, alpha, beta, gamma, delta, theta, and my optional is math. Okay, and believe me you people, in mathematics optional paper, मतलब I rarely find 2 into 2, 2/5. The entire math is in dy dx, integration, Laplace, ordinary differential equation, partial differential equation, vector analysis, complex analysis. मतलब entire math I am not going to encounter any simple multiplication 2/3, 5/3. No, everywhere alpha, beta, gamma, delta, theta, sine, phi, all these things. So for making our calculation easy with respect to non-mathematical background student or with those students who have fear with variable, we are not going to take x. And this is the first issue. And the second issue is that we can't divide, na? We can't divide x by 2. It will always remain in fraction. We can't multiply x by 2. It is not clear. So here we are trying to use that number, मतलब any number other than x, so that that particular number will make our calculation easy. So आप लोग बोल सकते हैं सर take 100, because हम या तो x लेते थे या तो 100 लेते थे. अब suppose if we have taken 100, let that number be 100, then is 100 is divisible by 3? No. Then again we will encounter fraction. So जब हमें लेना ही है तो why we will choose 100? हम वैसा नंबर लेना जो आराम से डिविजिबल हो जाए, ताकि फ्रैक्शन हमें इनकाउंटर ही ना करना पड़े थ्रू आउट आवर कैलकुलेशन. मतलब हम x ले रहे हैं, चलो x का सब्स्टिट्यूट है कि हमने 100 ले लिया, लेकिन why 100? जब कोई भी नंबर लेना है तो हम 100 क्यों लें? 100 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो why we will make our calculation easy, tough? हम ऐसा नंबर चूज करें ना जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो. सो आई हैव टेकन 15. सर ये 15 रैंडम नंबर है. हाँ, अब नाउ आई विल टेल यू हाउ आई रीच टू 15. ओके, सी 15 is divisible by 3 also, 15 is divisible by 5 also, so we can choose 30 also, I can choose 3000 also. Then another thing, why to take larger number? सबसे छोटा लो ना यार, आराम से कैलकुलेट होगा. हम 300 भी ले सकते हैं, 3 lakh भी ले सकते हैं, that will also be divisible by 5 and 3. So the question is that whenever we have to choose any variable, in general here the question will be solved by taking x. But whenever there is any circumstances that that particular question cannot be solved without using variable, then either take 100 or any number. So one step I am moving further beyond that, why to take 100 then? Then if we have to take any number, then I will take that number that get easily divisible by all the numbers which we encounter in our calculation. So I have taken 15. Now why 15? How we will know that 15 is exactly divisible by 3 and 5? Suppose here 3 and 5 was given. Suppose if we encounter 13 and 19, what we will do? 13 and 17, what we will do? Because that is not exactly divisible, and we are not so much smart that we can choose randomly that number which get exactly divisible. So here the concept of LCM come.
Now see another concept of LCM. That's why I have chosen percentage, because if we complete our percentage chapter, then simple concept, simple logic we will learn here only, and then only the application part we have to do in the other heads like ratio, proportion and all that. So see here, what is LCM? Now leave the question. We will talk about LCM here. So LCM क्या होता है? बचपन में हम लोग पढ़े हैं, वी ऑल रेड अबाउट LCM एंड SCF, लेकिन हैव वी थॉट व्हाट एक्चुअली LCM रिप्रेजेंट? नहीं, दिस इज द फुल फॉर्म, आई नो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. होता क्या है? कभी हमने सोचा इसका यूटिलाइजेशन क्या है डे टू डे लाइफ में? हैव वी एवर थॉट? नो. जो हर जगह स्पेस बना देता है, that number which has space in every factor है, चलिए कुछ आप सही बता रहे हैं डेफिनेटली. तो देखिए LCM का अगर हम देखें प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ पड़ता है, तो देखिए LCM लोएस्ट, फुल फॉर्म अगर हम LCM का देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डालते हैं. LCM ओके. अब एक बात बताइए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैथ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? सपोज इफ आई विल से टू यू दैट अंजलि टेल मी द मैक्सिमम, द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट यू विल से? इंफिनिटी, बिकॉज देयर इज नो लिमिट ना. सो द क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम यूजलेस if somebody will say tell me any greatest number, say infinity. Yes, infinity. मतलब answer to every question is infinity, so that is useless. Okay, so हमें करना क्या होगा? See here, lowest common multiple. Common multiple it means that ऐसा नंबर जो सभी से डिवाइड हो जाए. सभी इन द सेंस जो क्वेश्चन हमने पुट किया है, जो नंबर्स हमने पुट किया है, यहाँ पे कौन से नंबर हैं? 5 and 3. तो इफ आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट इज द LCM ऑफ 5 and 3 और लीव LCM, इफ आई सिंपली से आप कोई भी ऐसा नंबर बताइए जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 and 3 हो, आप बोल दिए इन्फिनिटी सर, कर लो आप डिवाइड, इट विल गेट डिवाइडेड बाई 5 ऑल्सो एंड इट विल गेट डिवाइडेड बाई 3 ऑल्सो. सही है. इफ आई विल आस्क यू पीपल दैट प्लीज टेल मी एनी नंबर विच गेट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 or 9 and 10, you will say sir infinity. 8 and 6 sir infinity. हाँ एग्जैक्टली. तो इस वजह से आता है LCM जो आपको बाउंड करे कि ना अब सबसे लोएस्ट बताओ. आप इन्फिनिटी बोल के आराम से निकल जाओगे, बट नाउ इफ आई विल ऐड दिस वर्ड लोएस्ट, नाउ टेल मी दैट लोएस्ट नंबर, दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच गेट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 and 5. अब कहानी बनती है. अब छोटा बताना है, बड़ा बताने तो बड़ा आसान है. तो अब हमें वो छोटा नंबर बताना है जो 3 and 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. देयर कम्स द रोल ऑफ LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. पूछिए. हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझिए. 15 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 3. मल्टीपल है ना, बड़ा है. एंड व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 15? 3 and 5. फैक्टर जो छोटे होते हैं ना, फंक्शनल यूनिट, वी जनरली इनकाउंटर अ टर्म दैट इज व्हाट इज ecosystem. In environment, if we are going to study what is the ecosystem, so we say that it is the functional unit of nature. सबसे छोटा, that is ecosystem. नेचर को अगर हम देखें तो the smallest thing is ecosystem. It can start from a drop of water to a ocean. All the things are ecosystem. पढ़े हो आप लोग या पढ़ोगे? तो सेम द फंक्शनल सबसे छोटा फैक्टर. So 5 and 3 are the factor of 15 and 15 is called the multiples. Multiple. अभी आपको डिफरेंस क्लियर हुआ फैक्टर एंड मल्टीपल में? ठीक है.
सो हियर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी दी एलसीएम, क्योंकि हाईएस्ट का तो फिर कोई मतलब नहीं है. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द एलसीएम. ओके, तो एलसीएम देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ सपोज इफ एनीबडी से दैट फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 and 8. सो वी विल राइट हियर 10, वी विल राइट हियर 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो वी विल राइट 5 एज इट इज, अगेन 2 5 1 अगेन 5 टिल 1 1 ना आ जाए. नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस. 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40. It means that LCM of 10 and 8 is 40. It means that 40 is the smallest number which will get exactly divisible by 10 also and 8 also. See here, 10 4 times 40, 8 5 times 40. It means that 40 is the smallest number which get exactly divisible by 10 and 8. Is it okay? Now regarding the HCF, we will deal these two chapter separately. कोई मतलब नहीं है अभी HCF का, ठीक है, तो हम उसे छोड़ देते हैं. Is it okay? तो अभी LCM पता चल गया. मतलब LCM वो चीज होता है जो हमें सबसे छोटा नंबर हो जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए. अगर 5 गिवन नंबर हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू write here all the 5 number 10 8 6 4 3 2 and we have to start writing this writing like this up to we get all 1 and then multiply this side. I think that you people know at least how to calculate the LCM. Only the factual thing or the concept behind the LCM was lacking. So अभी clear हो गया. So अब see in this question a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. So now we have to choose a number. So first of all we are not going to use variable. Again 100, no, if we have to choose a number then we will choose such number which get exactly divisible by 3 and 5, so that throughout our calculation we will not encounter any fraction. Fraction थोड़ा सा कठिन कर देता है calculation. So what we choose, we have to choose any number which get exactly divisible by 3 and 5, because here all the game about 5 and 3 or 3 and 5 only. So we will choose such number which is exactly divisible by 3 also, exactly divisible by 5 also. So for this case or in this scenario we will take the LCM of 5 and 3. The LCM of 5 and 3 is 15. See 5 3, 5 1 जा 5, 3 3 1 जा 3. Okay, so multiply 5 3 15. So rather than choosing our number as x or 100 we are going to choose 15. हाँ, ऐसा हो सकता था कि find the number. क्या चीज़? ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि find the हाँ, लेकिन उसमें फिर दूसरे फैक्ट्स दिए होंगे, उसमें कोई ना कोई चीज़ तो देंगे. अभी तो देखिए ना, ये पूरी बात फ्रैक्शन और परसेंटेज में कर रहे हैं, उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू दी ही नहीं है. अगर उन्होंने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दी होती तो फिर हम यूनिटरी मेथड पे आ जाते, अपना 15 कैलकुलेट करते और मान लेते. अगर मान लीजिए सपोज इन्होंने ये इसी क्वेश्चन में ये किया होता कि मान लीजिए ओरिजिनल नंबर 100 है या ओरिजिनल नंबर 150 है. ओरिजिनल नंबर 150 था, उसको मल्टीप्लाई करना था 5 by 3 से, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 by 5 से. सो व्हाट विल बी न्यू नंबर जो एक्चुअल में आता. तो हम क्या करते, सेम ये प्रोसेस करते और उसके बाद हम क्या करते, आवर ओरिजिनल इज 15 एंड क्वेश्चन इज 150. सो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 10. फिर जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर आता उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते. देखिए एवरीथिंग इज प्रोसेस सेम. देखिए आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द प्रोसेस, सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू अप्रोच ऑल द टॉपिक्स. ओके, प्रोसेस हम थ्रू आउट सीसैट में कहीं नहीं चेंज करेंगे. मैं इसी चीज पे फोकस डाल रहा हूं. आप बस इस तरीके को अच्छे से समझिए, प्रोसेस कहीं चेंज नहीं होने वाला है. ओके, अभी क्वेश्चन पे बढ़े. सो वी हैव चूजन अ रैंडम नंबर और नॉट अ रैंडम नंबर, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट व्हाई वी हैव टेकन 15. वो लॉजिक आपको पता चल गया. सो हमने मान लिया कि 15 नंबर था. नाउ इन एक्चुअली we have to multiply 15 by 5 by 3. That is given in the question.
एक्चुअल में हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से। सो अगर हम इसे 5/3 से मल्टीप्लाई करते तो व्हाट वी गेट 25, बट बाय मिस्टेक वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, तो हमने इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 9। इट मीन्स दैट एक्चुअली आना था 25 बट आया कितना 9। सो व्हाट इज द चेंज ऑफ 16? सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज और परसेंटेज एरर? This 16 is the change or error. So the question has been asked, what is the percentage change of error? So 16 upon original was the case 25, but instead of 25 what we get 9. So 16 upon 25 into 100 percentage, 64% error रहा। Now tell me, is it okay? हाँ, समझ में आया? So that I can proceed. कोई भी डाउट हो पूछिए। देखिए पैनिक मत होइए। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है क्या पल्लवी आपको? देखिए प्रैक्टिस करिए, ट्राई टू प्रैक्टिस एट होम। ये जो भी चीज़ है ना, क्योंकि मतलब द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट। द बेटर थिंग इज दैट वी डोंट हैव टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला, एंड द सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो। In my intro lectures also I have focused on these 2 to 3 sentences that we are not going to use any formula, single approach. We will try to avoid variables and fraction as much as possible. Okay, the same thing I am trying to follow. Okay, so shall I proceed to next question? Huh? थोड़ी सी स्पीड हमारी स्लो रहेगी, जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा हम अपनी स्पीड को तेज कर लेंगे, ठीक है? सो अभी स्पीड पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। सी व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट if the income tax is increased by 19%, net income is decreased by 16%, then find the rate of income tax. Okay, so here also we have to establish a relation. So what is a relation between income tax, net income? See, whatever you are earning in economics also, we have studied 3 type of income: disposable income, net income, gross income, all these things. So whatever you are earning is gross income or your total income. Out of that income you have to pay some tax. So out of that, suppose if you are earning 100 rupees, then 100 will be your gross income. Out of that 100, if you are paying 10 rupees as a tax, so after paying tax, how much is still remaining in your pocket? Speak, why you are not? Tax 90 rupees, because you have initially 100. After paying tax of 10 rupees, how much is still remaining? 90. That 90 is net income. After that you will pay the, or you will adjust the inflation and all that, then it will become disposable income. Leave that topic. For math, let us bound to these 2 things only. Whatever you are earning is your gross income. After paying the tax, whatever is remaining is net income. Acha, now please tell me, your gross income is 100. Out of this you are paying 10 rupees as a income tax. So how much is your net income? 90. This is the first case. The second case, suppose you have 100 rupees, now you have to pay a income tax of 20 rupees. So how much is your net income? 80. It means that, see first case, 100 rupees, income tax is 10, so net income will be
90. Another case, 100 rupees. If income tax is 20, so your net income will be 80. Is this okay or not? सही है. अब कंसिडर द केस 1 एंड केस 2. जितने रेट से या जितने अमाउंट से आपका इनकम बढ़ रहा है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, उतने ही अमाउंट से आपका नेट इनकम कम हो रहा है. भाई आपका इनकम टैक्स दूसरे केस में 10 रुपीज से बढ़ गया है, तो आपका नेट इनकम 10 रुपीज से कम हो गया है. एनी डाउट इन दैट? इट मीन्स दैट increment in income tax is equal to decrement in your net income. Here this is the relation which you have to establish, and believe me, there is these are not called formulas, okay? In UPSC also or anywhere, if you are going to memorize the formula na, then also in the examination hall, this relation only you have to think out, that what is the total wages. Total wages is the rate per hour into number of hours, area of rectangle, length into breadth, and here also total income is equal to net income plus income tax. These are the basic things which you have to apply. These are not considered as formula, okay? So see here, moving back to the question, increment in tax is equal to decrement in net income. Is it okay or not? So shall I proceed further? Now see what question is saying, that your income tax is increased by 19%. Okay, so the change in income tax is equal to change in income. See here, the two cases which I took here, the change in income tax is equal to change in net income. 10 rupees change, 10 rupees change. Change is same. If we are going to increase the income tax by X%, then our, not percentage, but in unit terms I am asking, if 100 rupees is increasing in your income tax, then definitely that 100 rupees is going to decrease from your net income. Is it okay? But the percentage value may differ. The percentage value may differ. I will explain you. See, in absolute terms, here in absolute terms, see example, here in absolute terms, with respect to this, 10 rupees has increased in income tax and 10 rupees has decreased in net income. So here 10 rupees is absolute, but if you will talk about the percentage, then see, income tax has increased by 100%, 10 to 20. So total increase is 100%. How 100%? Earlier value is 10, now value is 20. So how much increment? 10. 10 upon original value 10 into 100. So in absolute term, the increase in income tax is equal to decrease in net income, but in percentage term it might differ. See, here the increase in income tax is 100%, but decrease in net income, is it also 100%? No. See here, how much is the decrease? 10. How much was the original net income? 90. 10 upon 90 into 100. Decrease. So if we will talk about the percentage term, percentage may differ. Why percentage is differing? Because the actual value of net income is 90, but actual value of income tax is 10. ये 10 से 20 हो रहा है, ये 90 से 80 हो रहा है. Decrease in absolute term is okay, fine. जितना income tax बढ़ेगा, the same amount our net income will decrease. But in respect to percentage, it will differ, isn't it?
ये समझ में आया? सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट if the income tax is increased by 19% and net income is decreased by 16%, it means that 19% of income tax is equal to 6% of net income. 6% of net income. Make correction here. Note it down, because whenever you will get the soft copy now, and then at that time it will create a problem. Percentage, part 1, question number 10. सो ये इक्वेशन समझ में आया? हाउ दिस इक्वेशन केम? नहीं आया तो बताइए। नहीं, वो हटा दिए। वो टैक्स का नेट इनकम का इन्वर्स रिलेशन है। वो इन्वर्स रिलेशन इस वजह से है ना, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगा, वो एक अलग चीज़ है। वही चीज़ तो मैंने आपको बताया था ना अभी एग्जांपल से, 100 वाले इनकम टैक्स 10 से बढ़ के 20 हुआ तो हमारा नेट इनकम 90 से घट के 80 हो गया था। अब देखिए ना, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हूँ। जब आप ये प्रपोर्शन साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आता है। हाँ, वही हमें करना होगा। अभी ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? आकाश पूछिए ना, आप लोग पूछिए, अगर कोई भी डाउट है तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्लस माइनस साइन तब लगता है ना जब हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो और वो क्वांटिटी चेंज हो रही हो, ठीक है। यहाँ हम टैक्स की बात करें तो हमें टैक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर हमसे ये पूछता ना कि जो आप प्लस माइनस पूछ रही हैं कि टैक्स बढ़ गया है तो नया टैक्स क्या है, तो वहाँ पे मेन फोकस होता है हमारा टैक्स पे, तब हम प्लस माइनस लगाते और नया टैक्स या पुराना टैक्स कैलकुलेट करते। अभी हम दूसरा काम कर रहे हैं, ओवरऑल हम टैक्स को नेट इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। बताइए। यहाँ पे कुछ डिक्रीज और इंक्रीज का कुछ फर्क नहीं है। इट्स जस्ट वहाँ पे लिखा है कि इंक्रीमेंट इन टैक्स इज इक्वल्स टू डिक्रीमेंट इन नेट इनकम। सो आपने बस उन दोनों को इक्वेट कर दिया। देखिए, हमने आपको यहाँ पे बताया था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ये 100 रुपीज़ था फर्स्ट केस। यहाँ पे हमारा क्या था, जो इनकम टैक्स था वो कितना था, 10 रुपीज़। तो नेट इनकम कितना हो गया, 90। दूसरा सिनेरियो में क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपीज़ है। अब जो हमारा इनकम टैक्स है वो हो गया 20। अब हमारा जो नेट इनकम है वो कितना हो गया, 80। सो अगर आप देखेंगी कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इनकम टैक्स, ये 10 से कितना हो गया, 20। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज चेंज इन टैक्स, इट इज ऑफ 100%। ओके, अर्लियर इट was 10, now it is 20। सो परसेंटेज चेंज क्या हुआ हमारा, 100% का हुआ। हमने आपको बताया था कैसे, 10 हो गया 20, डिफरेंस कितना हुआ, 20 माइनस 10, 10 का, 10 अपॉन ओरिजिनल 10 इंटू 100, 100%। अब ये देखिए, अगर इसको ध्यान से आप देखिए, नेट इनकम 90 था, अब हमारा नेट इनकम कितना हो गया, 80। चेंज कितने का हुआ, 10 का। तो 10 अपॉन 90
इंटू 100, दैट इज 100/9%। तो देखिए परसेंटेज तो वेरी हो रहा है, नो इशू, बट एब्सोल्यूट क्वांटिटी सेम है। अगर ये 10 से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कितना हो गया, 10 का इंक्रीमेंट हुआ इनकम टैक्स में, यहाँ नेट इनकम में कितने का डिक्रीमेंट हुआ। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज करिए आप 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रही हैं, ठीक है। आप अगर 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रही हैं, आप किसी गरीब को पैसा दे रही हैं, ओके, और मैं सपोज करिए मैं सिर्फ 10,000 अर्न कर रहा हूँ, मैंने अपने इनकम का 10% दे दिया उस गरीब को, कितना रुपया वो पाया, दैट पुअर पर्सन, 10% ऑफ 10,000। आपने भी 10, मैं बोल रहा हूँ मैंने 10 दिया, आप भी 10 दो, तो मेरा 10% कितना हुआ, 1,000 रुपीज़। आप कितना अर्न कर रही हो, 1 लाख, आपका 10% कितना हुआ, 10,000। परसेंटेज सेम है लेकिन एब्सोल्यूट टर्म वेरी हो गया, तो आप थोड़े 10% दोगे, समझ रहे हो। अब इसको हम उल्टा करके इस केस को देख लेते हैं। आप भी 100 रुपीज़ दे रही हो, मान लो आपकी इनकम कितनी है, सपोज करिए आपकी इनकम है 1,000 रुपीज़, आप उसमें से 100 रुपीज़ दे रही हो, मेरी इनकम है 10,000, मैं भी 100 रुपीज़ दे रहा हूँ। दोनों लोग देखिए सेम एब्सोल्यूट टर्म में सेम हम दे रहे हैं, आप भी 100 दे रही हो, मैं भी 100 दे रहा हूँ। आप 1,000 में से 100 दे रही हो, इसका मतलब आपने कितना परसेंट डोनेट कर दिया, 10%। 10% ऑफ योर इनकम यू हैव डोनेटेड। सिंस यू आर अर्निंग 1,000 रुपीज़, सो 100 रुपीज़ इफ यू आर डोनेटिंग, इट मीन्स दैट यू आर डोनेटिंग 10%। एंड सपोज आई एम अर्निंग 10,000 and out of that 10,000 I am also donating 100 rupees, but in percentage wise I am donating only 1% of my income। अभी समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बेस अलग हो जा रहा है ना। आपके केस में बेस 1,000 रुपीज़ है, आप 1,000 का 10% मतलब 100 रुपीज़ दे रही हो, तो 100 रुपीज़ कितना परसेंट हुआ, 10%। मेरा बेस 10,000 है, तो मेरा 100 रुपीज़ 1% हुआ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेस आर डिफरेंट। अभी ये चीज समझ में आ गई कि आपको। देखिए द थिंग इज ऑल अबाउट दिस ओनली। हमें पता है व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज फ्रैक्शन, लेकिन जो इन डेप्थ नॉलेज है ना कि एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर वी आर लैकिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी तक आप सभी लोग, आई थिंक दैट यू ऑल पीपल आर ग्रेजुएट, सबको पता है वो परसेंटेज क्या होता है, एवरीबडी नोज। किसी को भी बोल दिया आपकी सैलरी का 10% इंक्रीमेंट है, देखिए वो कैसे खुश हो जाएगा, उसे पता है कितना इंक्रीज होगा, वो तुरंत कैलकुलेट कर लेगा कि अच्छा बाय दिस टाइम आई एम अर्निंग दिस एंड आफ्टर 10% इंक्रीमेंट आई विल गेट दिस। आपका 10% डिप्रिशिएशन है, आदमी तुरंत दुखी हो जाता है बिकॉज ही नो कि कितने का लॉस हुआ है। इफ एनीबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी आइदर इन म्यूचुअल फंड और इन FD और इन सेविंग अकाउंट, सो वी टेक वेरी फाइनाइट केयर ऑफ विच परसेंटेज वॉट और एनीबडी इज प्रोवाइडिंग। लेकिन इन डेप्थ थोड़ा सा उससे जो स्टेप हम लोग अभी तक जहाँ तक सोच रहे थे ना, मैं आपको सिर्फ उससे एक स्टेप और बियॉन्ड ले जाना चाह रहा हूँ कि एक कदम और आगे चढ़ के सोचिए। अभी आप यहाँ से चीज़ों को देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर उठिए। अभी आप यहाँ से चीज़ों को देख रही हैं तो आपका विज़न उतना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक स्टेप और ऊपर उठिए, आपका विज़न बढ़ जाएगा। ओनली दैट थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू पीपल। परसेंटेज सबको पता है, LCM सबको पता है, SCF सबको पता है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट देयर इज अ डिफिकल्टी बिकॉज वी लैक इन डेप्थ, डेप्थ इज लैकिंग। अभी ये चीज़ समझ में आया कि हाउ इन एब्सोल्यूट टर्म इट इज सेम, 10 रुपीज़ हियर ऑल्सो, 10 रुपीज़ हियर ऑल्सो, बट इन परसेंटेज इट विल डिफर। आप भी 100 रुपीज़ डोनेट कर रहे हो, मैं भी 100 रुपीज़ डोनेट कर रहा हूँ। मेरी सैलरी 10,000 है, आपकी सैलरी 1,000 है, तो आपका 100 रुपीज़ 10% होगा, मेरा 100 रुपीज़ 1% होगा। सेम चीज़ यहाँ हो रहा है, इनकम टैक्स 10 है तो 10 से ये 20 हो रहा है तो 100% बढ़ रहा है। ये 90 है और 90 से 80 हो रहा है, तो चेंज देखेंगे ना, 10 रुपीज़ का 90 पे क्या असर पड़ेगा, कम पड़ेगा, लेकिन 10 रुपीज़ का 10 पे क्या असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इजंट इट? अभी समझ में आया कि नहीं? नहीं, ये तो मैं वैसे समझा रहा हूं। तो टैक्स बढ़ा
नेट इनकम घट गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज अलग अलग होगा, हमने आपको दिखलाया था, एक जगह 100% टैक्स बढ़ा है और एक जगह इनकम सिर्फ 100/9 ऑलमोस्ट 10% ही डिक्रीज हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म दोनों में सेम है, 10 रुपीज। सेम हियर, द सेम थिंग आई वांट टू कन्वे हियर, दैट %19 ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 6% ऑफ नेट इनकम। जिस तरह हमारे केस में क्या था, जो मैंने एग्जांपल लिया था, 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स कितना था, 10 इज इक्वल टू 100/9% ऑफ इनकम था ना, दोनों ही 10 अप्रोच कर रहे थे। सिमिलरली यहां पर भी इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% एंड नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 6%। सो हियर 19% ऑफ टैक्स, अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू में आ रहे हैं, इज इक्वल टू 6% ऑफ नेट इनकम, क्योंकि परसेंटेज तो वेग है ना, परसेंटेज तो हमेशा किसी का सहारा खोजता है। परसेंटेज इज मतलब इंडिपेंडेंट परसेंट इज मीनिंगलेस, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एनी बेंचमार्क और एनी डेटा और फैक्ट। लेकिन एब्सोल्यूट फिगर का अपने आप में मतलब होता है, 10 रुपीज से इनकम बढ़ा, ओके 10 रुपीज इंक्रीमेंट हुआ है, 10% के लिए आपको चाहिए होगा ना कि 10% ऑफ व्हाट, तो परसेंटेज इज ऑलवेज डिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट इज इंडिपेंडेंट, वो अपने आप में है। सो हियर परसेंटेज ऑफ टैक्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नेट इनकम, एब्सोल्यूट वैल्यू में ये दोनों सेम होगा, इजंट इट? यहां तक समझ में आया? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नेट इनकम को इधर ले जाइए, 100 काटिए और 19 को इधर लाइए, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम इज 6/19। यहां तक समझ में आया? इसके बाद छोटा सा एक चेंज और है, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये बताइए टैक्स कितना है, 6, नेट इनकम कितना है, 19, तो टोटल सैलरी कितनी हुई, 19 + 6। मतलब वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर ऑल्सो ना, कि हमने मान लिया कि भाई टैक्स 6 रुपीज़ है, नेट इनकम 19 रुपीज़ है, तो टोटल अर्निंग कितनी हुई, 25। 25 इज द ग्रॉस इनकम या टोटल अर्निंग। यहां पे क्या हो गया, 19 रुपीज़ इसकी नेट इनकम हो गई, 6 रुपीज़ इसका टैक्स हो गया। यहां तक समझ में आया? अब पूछिए व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, पढ़िए। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट मीन्स परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। It means that whatever we are paying the tax, it is always calculated on our income. That is only income tax ना। तो क्या हो गया हमारा, 6/25 into 100, isn't it? सही है, 25 4 24%, सही है। अब ये बताइए, आसान लग रहा है थोड़ा थोड़ा? देखो नए नए कंसेप्ट तो अभी 1-2 दिन और इनकाउंटर होंगे, लेकिन उसके बाद से फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? जैसे आज 2 कंसेप्ट हमारे नए आए, LCM का कंसेप्ट आया कि वाई वी आर अवॉइडिंग वेरिएबल्स, वाई वी आर अवॉइडिंग 100, ओके? हाँ, यार सी उसका कोई हाँ वो एक लॉजिक है ना यार, वो आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा बिलीव मी, आई एम आस्किंग वन थिंग, यू हैव मेमोराइज्ड सपोज 200 formulas, but even though in the examination hall you have to establish that relation, first thing, and second thing is that UPSC is going to ask this type of question only, मतलब out of 50 hardly 1 to 2 questions. See, they are UPSC, definitely they will make 1 to 2 questions. Even we can see such type of examples in prelims GS also.
1 to 2 question out random, at random they will make. They will take the names of any book. Yeah, anybody can memorize all the text of Buddhism and Jainism. And they evolved in 6th century BC, and now it is 2000 AD. So in 2600, whatever Jainism, Buddhism, Hinduism, what all they did, is it possible to us to memorize all the text? No. So 1 to 2 question leverage is good, चलता है. In fact, 5 questions, up to 5 question it is okay. उतना तो यार, because they are UPSC, so उतना तो उनको डिस्काउंट देना होगा ना. अभी ठीक है. One more question we will discuss today. Okay, thereafter we will wind up our lecture. जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग मतलब डू आस्क मी, क्योंकि क्या है ना, ये मुश्किल से दो दिन 3 दिन और इट विल टेक मोर. बाकी ओके सी, इफ यू हैव इशूज विद रिलेशन ऑल्सो, देन ओनली टिल नाउ वी हैव रेड आई थिंक दैट 3 रिलेशंस: एरिया, वेजेस. हाँ, ये थोड़ा अलग था, तो मतलब ठीक है, देखते हैं. थोड़ा सा फैमिलियर होंगे आप भी. अब इस डायरेक्शन में सोचेंगे तो कुछ आप भी इवॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो बोल रहा है वो करना है. मतलब जनरली स्टूडेंट आस्क मी सर सीसैट क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मेरा वही उनका कहने का सेंस होता है, भाई क्वेश्चन वॉट एवर क्वेश्चन इज सेइंग, जस्ट डू दैट, यू विल रीच टू द रिजल्ट. कुछ अपने तरफ से नहीं करना है. इन मेंस, in prelims, we have to apply mind. Whatever is written in the question, that is not the necessary fact or data by which you can answer that question. आपने जो पढ़ा है, you have to utilize, you have to memorize, you have to recall all those information. But in CSAT, कुछ नहीं. Whatever is given in the question, in the way what question is saying, do in that way only. Draw the lines, draw the figure, whatever question is saying, no any information what is you have to keep in your mind. Just simply do it what question is saying, you will reach to the result. In geography questions, in economic questions, we have to use the entire concept. क्या था, बढ़ा था, घटा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, या मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा. वी हैव टू थिंक क्या पढ़ें. बट इन सीसैट नथिंग ना. वॉट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग, फॉर्मूला याद करना नहीं है फर्स्ट थिंग. एक ही तरीका है. तो जब वी आर लेफ्ट विद ओनली वन वे, दैट टू विदाउट फार्मूला, फिर क्या, इट इज़ वेरी सिंपल. व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, डू दैट. मतलब वी डोंट हैव ऑप्शन ना, एनी शॉर्टकट, एनी फार्मूला, different methods. No, we have only one method, nothing else. So with that method, it means that we have to do, or we have to follow the way what question is saying. Okay, so moving to the next question. See here, your doubt will maybe clarify by this question also. Acha, this type of question has been asked in this year also. If X earn 25% more than Y, then what percent less does Y earns than X? The doubt which was raised by you, I think that this question will clarify. Okay, before going to this question, tell me one thing. Suppose Pallavi and Anjali, you people are there, and very simple thing I am going to ask. Suppose Anjali is earning 100 rupees. Chalo, take the example of 50. Pallavi is earning 50 rupees. Now, how much percentage more Anjali is earning than Pallavi? Or I think that I have wrongly framed the question. No, right? How much percent Anjali is earning more than Pallavi? See here, in this sentence what came? Than Pallavi. Means here Pallavi is the benchmark. Pallavi is the benchmark and I am analyzing Anjali with respect to Pallavi. It means that first of all the difference is 50 rupees. Now my question is that how much percentage Anjali is earning
more than Pallavi. It means that than Pallavi, it means that Pallavi will come in denominator. Put it 50. And how much more Anjali is earning? 50. So keep 50 in numerator, multiply it by 100%. मतलब Anjali is earning 100% more than Pallavi. Is it okay or not? ये सही है, डबल है 100%. आप 50 अर्न कर रही हैं, अंजलि इज अर्निंग 100. नाउ इफ आई एम रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन, बाई हाउ मच परसेंट पल्लवी इज अर्निंग लेस देन अंजलि? बाई हाउ मच परसेंट पल्लवी इज अर्निंग लेस देन अंजलि? इट मीन्स दैट व्हाट विल कम इन डिनोमिनेटर? 100. सो राइट हियर 100. How much you are earning less? 50 rupees. So here 50 by 100 into 100, 50%. See, data are same, facts are same, but the percentage vary. As I already told you, percentage is relative. Independent percentage is meaningless. So see here, Anjali is earning 100, Pallavi is earning 50. Every data is same, but see, in both the case percentage vary. In one case percentage came to be 100%, and in other case percentage came to be 50%. Facts are same, everything is same. Why? Base changed, because the total change, absolute term, the change is 50, that is also constant. But 50 with respect to what? In first case it is with respect to 50, and in second case it is with respect to 100. So कहने का मतलब ये है, आप दोनों लोग अर्न कर रहे हो, एक ज़्यादा अर्न कर रहा है, एक कम अर्न कर रहा है, लेकिन कौन किससे कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें, और कौन किससे कितना अर्न कम कर रहा है, द परसेंटेज वैल्यू विल डिफर. इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू? अब हो गया होगा, क्लियर है? सो शैल वी मूव टू द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक्स अर्न 25% मोर देन वाई. व्हाट हियर केम? Then y. So first of all, what we will do, as soon as we will see the percentage, the first thing is that we are going to convert that percentage into fraction. So 25% is converted into fraction. It means that 25 upon 100, that is 1 by 4, isn't it? Now x earn 25% more than y, plus come. It means that denominator always original. Then y, it means that y is earning 4. Okay, so how much x is earning? 4 plus 1, 5. अभी क्लियर है? y is earning 4 rupees and x is earning 5 rupees. Up to this level it is clear. What is the difference? 1 rupees. वो हमने वो भी रख लिया. Now what has been asked in the question? Then what percent less y earn than x? Than x, it means that what will come in denominator? 5. And how much percentage, मतलब how much change? 1 upon 5 into 100, that comes to be 20%. See here, facts and data, all the things are same, but here 20% and here 25%. So answer is y is earning 20% less than x. अभी बताइए, समझ में आ गया? क्या चीज़ मैम? ये हमने 1/5 जो लिया है कैलकुलेशन में, वो हमने 5 और 4 का 1 डिफरेंस लिया है. डिफरेंस लिया है, हाँ. अगर वो गलती से 4/5 लेते तो उसका मीनिंग ये हो जाता है कि मैं परसेंट नहीं ले रही हूँ, उसकी अमाउंट कंसिडर करके वो डाली मैंने. हाँ, अगर हम ये पूछते ना कि उसका ये जो आप बोलिए, अगर हम यहाँ 4 ले लेते तो क्वेश्चन क्या होता? इन दैट सिनेरियो क्वेश्चन ये होता कि y कितना परसेंट अर्न कर रहा है x के, y कितना परसेंट अर्न कर रहा है x के. सपोज वो हम पुराना एग्जांपल लेते हैं, अंजलि 100 रुपीज अर्न कर रही है, पल्लवी कितना अर्न कर रही है? 50.
तो अगर हम ये बोल दें कि इसका मतलब ये जो पल्लवी है ये कितना परसेंट अंजलि का अर्न कर रही है, अंजलि का कितना परसेंट अर्न कर रही है, तो हम कर देंगे पल्लवी का 50 अपॉन अंजलि का 100 इंटू 100, तो 50%। इसका मतलब पल्लवी इज अर्निंग 50% ऑफ व्हाट अंजलि इज अर्निंग। सो अगर क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि कितने परसेंट वाई अर्न कर रहा है एक्स का, तब हम ले लेते 4/5। देखिए 3, 4, 5 आप जितने एंगल डाल दो, वंस इफ यू हैव द क्लियर कंसेप्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। लेट देम आस्क व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। गोल 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 जितना घुमाते हैं ना, लेट देम करने दो। इफ आवर कंसेप्ट इज क्लियर, नाउ यू पीपल प्लीज टेल मी दैट दिस इज 11th क्वेश्चन एंड समझ में आ रहा है। देखिए अभी तक हम लोगों ने कई कंसेप्ट को इनकाउंटर किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी परसेंटेज और फ्रैक्शन को काफ़ी क्लोज से देख लिया, जो शायद हम लोग ऐसे ही आता है करके निकल जाते हैं। एलसीएम को भी काफ़ी क्लोज से देख लिया। तो बस यार यही करना है, नथिंग मोर वी हैव टू डू, ओनली दिस मच एफर्ट दैट वॉट एवर वी नो वी विल नो इट स्लाइटली मोर डीपर, okay? And once we attain that depth, no use of any formula. Why formula is there? See now what are the themes which are lying behind the formula? These concepts only. Those who are aware of these concepts, those who are aware of such much depth, then they formulate कि अच्छा ये rather than to give explanation, ask the student directly do this. खत्म. They don't know about the background, because every formula is background na, nothing is came from heaven. And those people who make formula, generally they have the knowledge of this entire things. So rather than to communicate these essence to the student, what they do, they formulate the formula, and rather than giving such type of explanation to the student, they directly provide the student with formula. अब होता क्या है कि हम तो वो सीख गए, पीछे का डेप्थ हमें पता नहीं है। अब देयर इज स्लाइट चेंज इन द क्वेश्चन एंड आवर फॉर्मूला गेट फेल्ड देयर। आप लोग पढ़े होंगे अक्सर, दिस हैज बीन टोल्ड टू यू पीपल दैट अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली इन द केस व्हेन दिस थिंग अकर। व्हाई दे आर बाउंडिंग द फ्रीडम? बिकॉज इंडिपेंडेंटली दे कांट अप्लाई अ सिंगल फॉर्मूला टू एवरीथिंग, सो दे बाउंड द कंडीशन। अगर ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, जहाँ ये तीनों कंडीशन दिखे ये लगा दो। वाई आई एम बाउंडेड बाई योर बाउंड्री कंडीशन? नो। तो अब यूनिक फॉर्मूला तो निकल नहीं सकता है। सो बेटर है कि हम उस फॉर्मूले के थोड़े से डेप्थ में जाएं, फॉर्मूले के पीछे जाएं, कहाँ से दैट फॉर्मूला इज ओरिजिनेटिंग। एक बार हम वो जान गए, फिर व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोराइजिंग एनी फॉर्मूला। जो चेंज होगा वी विल डू इट एंड वी विल डेफिनेटली रीच टू द रिजल्ट। एज सुन एज यू विल गेट more clarity over percentage, ratio and proportion, believe me, nothing is left in CSAT. All those things, all those formula, what are basically formula for profit and loss is different, formula for percentage is different, but actually what are those things? See, this is the question of percentage also, this is the question of ratio and proportion also, this is the concept of mixture also, and this is only the concept of profit and loss also. The same question, same fact, same result. Then why we call it as percentage? No, this question is belong to percentage, this question is belong to ratio and proportion, this question is belonging to mixture and alligation. Total useless. Once you understand the logic, then it doesn't matter. And why we are segregating a particular topic and are calling it as percentage and other as profit and loss? It's only a framing of sentences which make a question from ratio and proportion to percentage, and again new frame of sentences that will use same data, the result will also be same, and the question become the question of profit and loss, question of compound interest, question of successive discount, all are same. See now, look behind, try to think what is the concept behind compound interest, interest on interest. Okay, if this is the concept behind compound interest, then what is the concept behind successive discount? Whenever we go to shop, we see that 50 plus 50 plus 50. Isn't it means that they are giving the cloth, along with that they are giving 50 rupees or 50% of the entire amount? No.
Suppose if we see any advertisement board where it is mentioned that 50% plus 50% plus 50%, so isn't it mean that if you go to that shop, they will give you the clothes and 50% of the cost price of that cloth? No. So successive discount, we term them successive discount. Here the concept behind successive discount and the concept behind compound interest is same. Interest on interest, discount on discount. The question based on percentage, that is population is increasing. First year it has increased by 20%, then on second year it has increased by 30%, then again on fourth year it has increased by 50%. So the question is same na. Suppose we are going to purchase a cloth, their discount is given first 50%, then 40%, then 50%, and the example which I have taken of population increase, both are same, concept is same. But with the beautifulness of the sentence formation or having the good hold of literature,